guys, welcome back to my new blog. I hope you guys doing well. So today I'm going to show you how to make vegetable carvings like a capsicum, cucumber, carrots, chili, whatever you have vegetable you can make easy and nice garnish. So please like, share and subscribe this video and subscribe for more updates. So let's see, stay in here until finish this video. Okay, just wait and watch. So guys, our garnish finally is done. So you can see what a beautiful flowers. If you put in your platter, your salad bowls, it looks very good. And so please like, share and subscribe this video if you like, up to you. And I hope you guys enjoy this video. So this is basic garnish like a normal and easy. So I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना. सो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने बनाया आज कुकुम्बर गार्निश और चिल्ली गार्निश बनाया, कैप्सिकम मिक्स, येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम. आप कोई भी आपके पास वेजिटेबल आप उसकी अच्छे से कार्विंग कर सकते हैं और प्लेटिंग में डाल सकते हैं, सैलड बॉल्स में डाल सकते हैं. तो वीडियो में बने रहें, आगे भी देखने को मिलेगा कि हम किस तरीके से सैलड बॉल में गार्निश डालते हैं, प्लाटर हो गए. सो आप कहीं भी गार्निश यूज कर सकते हैं. वैसे तो आजकल ये नॉर्मल गार्निश हर कोई बना लेता है, हर कोई यूज करता है, लेकिन फिर भी आप देख लें अपने नॉलेज के लिए कि आप क्या बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं. एक आइडिया मिलता है वीडियो देखने के बाद. सो लेट्स सी गाइस, एंजॉय.
देख सकते हैं आप, हमने किस तरीके से सैलेड बोल के अंदर ये गार्निश डाला है। कलरफुल गार्निश लग रहा है, ग्रीन भी लग रहा है, येलो भी लग रहा है, रेड भी लग रहा है। तो अच्छे से कॉम्बिनेशन कलर हो रहा है और ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप देख सकते हैं, लुक्स वेरी नाइस। एंड लेट्स सी हाउ वी पुट गार्निश ऑन द बॉल एंड प्लाटर्स। सो गाइस, प्लीज़ like, share and subscribe also for more updates. So let's see. सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट हमारा सैलेड बार कंप्लीट हो गया है और हमने बहुत ही इजी और नॉर्मल तरीके से गार्निश किया है, लेकिन लुक्स वेरी नाइस। सो इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स. So thank you so much your support and love. Keep supporting me always. जैसे कि डेली अपडेट में बताता हूँ कि हमारा डेली लाइफ, डेली वर्क। सो आज का दिन भी हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया, बुफे लग गई, तो कल की तैयारी करते हैं। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो रही है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।